myself Dr. Kamal Kumar Mittal from Ajay Kumar Garg Engineering College, Ghaziabad, and the department is Mechanical Engineering. So, continuing with the series of lecture series of computer integrated manufacturing, today I am going to discuss more about computer integrated manufacturing. Means we will discuss some other components of computer integrated manufacturing. So, in previous sessions we have discussed about the definition of CIM. So, that is CIM is basically the integration of CAD, computer design, CAM, that is computer aided manufacturing, and business related functions. In CIM we have discussed the component CAD in detail in the last lecture. CAD के different components को हमने समझा था, that is modeling, means we have to generate a 2D or 3D model using the computer software by using different commands. जो भी requirement है, जो need है, उसके according we have to develop the part over the system, computer system. Then we have studied about the synthesis. Then we have discussed about the optimization and analysis. So, analysis different types की हमने पढ़ी, उसमें जैसे कि mass property analysis है, tolerance analysis है, interference analysis है. फिर हमने finite element analysis को समझा था by taking some examples. We have seen that if a fluid is flowing through a pipe, so how the flow analysis can be easily, means हम समझ सकते हैं कि फ्लो जब हो रहा है, दैट फ्लो या जो पाइप में फ्लो है या किसी चैनल में फ्लो हो रहा है, वो एक लिक्विड हो सकता है या कोई एक गैस होगी. तो किस तरह से स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होती हैं बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द लिक्विड एंड बिटवीन द walls of the tube or pipe and the liquid or gases. Then we have studied stress analysis like tensile stresses, compressive stresses. Then we have studied the kinematic and dynamic analysis by taking an example of a piston slider crank mechanism. So, this is about the CAD. Then also we have discussed about the design evaluation using RP technique, rapid prototyping technique. There may be different rapid prototyping technique, and finally, we have discussed about the drafting or presentation, how we can present. Now, second component of CIM, that is computer integrated manufacturing. So, we will discuss computer aided manufacturing in detail. So, continuing, so introduction to computer aided manufacturing. कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि किसी भी पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर की सहायता से पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग करना, पार्ट को डेवलप करना. सो CAM in short is the use of software and computer controlled machinery to automate a manufacturing processes. तो जब we are using कंप्यूटर की सहायता से बनाते हैं, तो there are certain logics, certain rules are there. कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लॉजिक्स होते हैं, कुछ कोड्स होते हैं, वो हमें समझना होगा कि वो क्या होते हैं, किस तरह से हम कंप्यूटर की सहायता से हम एक प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं. तो सबसे पहले आता है पोजीशनिंग सिस्टम. पोजीशनिंग सिस्टम का मतलब ये है कि कोई भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, सपोज वी आर गोइंग टू ड्रिल ओवर ए पीस. सो लाइक suppose so these are the four located or four areas where we have to make a drill over a, this is a job, this we can say this is a job. So, how to represent in a coordinate system? So there is a coordinate system like absolute coordinate system and incremental coordinate system. Absolute and incremental. So these are the two types of coordinate system we are using. So, for example, suppose the coordinate of this is the origin and this is the length, we can say this is 2
this is again 2, this is 1 the distance, and this is also 1 distance. So, 2x direction, then 2x, then x again 1, and then in y direction 1 is distance between 3 and 4. So, the coordinate of this is, when we are considering absolute coordinate system, is x 2, and this is also 1. So, this is 2 1 2 comma 1 for this. For this also we take the coordinate from this reference, that is from origin. So, this is 2 plus 2 4 in x and 1 in y. So, 4 comma 1, this is the coordinate. Similarly, for third 2 to 4 5 comma 1. So, 5 comma 1. Now, for fourth coordinate it is 5 in x and 2. So, 5 comma 2. So, these are the coordinates of different located areas where we have to make a drill. जहाँ पे हमें drill करना है उसकी जो location है वो इस तरह से हम ज्ञात करेंगे using absolute coordinate system. Then second is the incremental coordinate system. इसमें क्या होता है? Again, suppose same example is there. And suppose 1, 2, 3, 4. Now, again distance is 2, 2, 1, 1 and 1. This is origin. So, the coordinate of this is 2 and 1, 2 and 1 with respect to origin. Now, the coordinate of second located area is calculated based considering that this is the frame of reference. इसको हम reference मानेंगे, उसके respect में second coordinate की position को हम निकालेंगे. तो this is 2 in x and 1. So, 2 1 again. So, this is movement. Two comma 0 because only linear movement is there. Then again positioning of this with this base means this is again 1 in x direction and 0 in y. Now, the third is this one. So, considering this with respect to this point. So, there is no x movement, only movement in y direction, that is of 1 unit. So, 0 comma 1. So, position of the incremented means next location is calculated based on the previous location. So, these are the two type of coordinate system. Now, next is the, we can say that there are movement of the tool. Suppose we are going to perform a turning operation over a lathe machine. So, in x direction tool is moving. So, similarly, tool can be moved in y direction, in z direction. So, x we can say x 30, y 20, like that we represent in a part program. Basically, these logics are contained under a part program. Part program होता है, उसके अंदर ये सारे logics आते हैं. Similarly, in z direction also. Now, if there is a, we are using the spindle. So, spindle is rotating with some revolution per minute. So, we define S words as spindle 20, whatever is the speed required. Similarly, F for feed words, that may be 10 mm per minute or whatever it may be. Similarly, there are some preparatory codes and miscellaneous code. We say that prep and yes code. So, these are called G code and these are called M code. So, preparative codes G code and miscellaneous code are M code.
So G code is basically the like if there is a linear movement, linear interpolation, or there may be some circular interpolation that may be clockwise or anti-clockwise. So there are different G codes like G01, G02, G03. Similarly, some miscellaneous M codes are there, like if we have to start the program, if we have to then start the spindle, if we are using coolant, then start the coolant, stop the coolant after performing the operation, stop the spindle, then end the program. There may be more miscellaneous code. So these are represented by M01, M02, M03 like that. So these are the different codes which is used to make a part program. These codes and a part program we will discuss in the coming lecture by taking a example of a job which is going to be manufactured. So these are the different codes. So CAM is the use of software and computer controlled machinery to automate a manufacturing process. CAM reduces waste and energy for enhanced manufacturing and production efficiency via increased production speeds, raw material consistency and more precise tooling accuracy, because we are using computer system. So computer system means already program is there. So this is more accurate. Human being से error होने की chances ज़्यादा होती है, but when we are using computer system, highly sophisticated CNC machines we are using, so there is a less chance of error and wastage. And also energy is also reduces and efficiency thereby increases. Via increasing production speed, we are productivity increase होती है, we are more responsive to the customer. Now CAM can be divided into two broad categories. CAM को दो categories में divide कर सकते हैं हम, manufacturing planning and control. Manufacturing planning and manufacturing control. So planning is basically the computer aided process planning. कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग से पहले मैनुअल प्लानिंग होती थी, उसमें बहुत टाइम लगता था, समय लगता था. यदि उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ रहे हैं, रिक्वायरमेंट होती तो अगेन उसको फिर से प्लान करके पूरी डिज़ाइन पैरामीटर्स को हमें स्टडी करना होता था. दैट विल पेन स्टैकिंग टास्क, उसमें बहुत समय लगता था. लेकिन कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग में क्या है, व्हाट वी आर डूइंग, इट इज़ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू एड इन द प्रोसेस प्लानिंग. सो इन दिस व्हाट इज़ देयर, we know the product design parameter of a particular product. एक प्रोडक्ट जिसको हमें मैन्युफैक्चर करना है उसके डिज़ाइन पैरामीटर हमें पता होते हैं. वी आर सेंडिंग इनपुट टू द कंप्यूटर सिस्टम एंड कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड दैट यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी टू जनरेट ए रूट शीट. उससे हमें एक रूट शीट मिलती है. रूट शीट का मतलब है कि जिस प्रोसेस से उस प्रोडक्ट को हमें बनाना है वो रूट शीट हमें मिल जाती है. And if there is a change, so therefore CAM or CAPP, basically it is called CAPP, that is computer aided process planning. It is a link between CAD, that is computer aided design, and CAM, computer aided manufacturing. Now if there is a change in the product, यदि हम प्रोडक्ट में कुछ चेंज करते हैं, कुछ नया प्रोडक्ट बनाना है, so again we are already having that data in the computer system, lots of data is there, input data is there. So again computer system using artificial intelligence and make a new root sheet for the new product, and we can store all these files in the computer system very easily. So this is about manufacturing planning. Then manufacturing control. So manufacturing control means process monitoring and control is the ability to monitor and adjust a process to give a desired output. तो मॉनिटर करना, मॉनिटर का मतलब है कि मीन्स व्हाट इज हैपनिंग. सपोज वी आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर ए शाफ्ट और देयर मे बी नंबर ऑफ शाफ्ट्स. सो वी सी दैट वेदर द शाफ्ट विच देयर इज अ डायमेंशन ऑफ ए शाफ्ट एंड टॉलरेंस इज देयर. सो जो शाफ्ट है वो उस टॉलरेंस में, उस डायमेंशन में, उस लिमिट में है या नहीं. सो फॉर दैट वी आर हैविंग द सम क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो, लाइक सपोज वी आर हैविंग 4 samples, 3, 4.
and 20.5, 20.4, 20.3, 20.1. These are the different dimensions of a samples 1 of different shaft, like in second 20.3, 20.2, 20.1, 20.01, 20.5, 20.3, 20.9, 20.5. Like in 4, it is 20.01, 20.02, 20.7, 20.8. So these are the 4 samples, and these are the dimensions of different shafts which are going to be produced. अलग अलग shaft की dimension है. So from quality point, what we are going to do, we are going to make a X bar and R chart. X bar and R chart. So in this, what we are going for X bar here, this is the central line. And this is the upper control limit, this is the lower control limit. So when we are talking about R chart, so R का मतलब है रेंज. रेंज का मतलब है कि सैम्पल 1 है, इसमें हम रेंज देख लेंगे मैक्सिमम और मिनिमम साइज़ क्या है, इसमें रेंज देख लेंगे, इसमें रेंज, और चारों की रेंज हम इवेल्यूट कर लेंगे R1, R2, R3, R4. इस रेंज से we calculate the R bar, that is the average of all these. So this center line is basically the R bar. Now for sample 1, what is the range? Suppose this point lies here. For sample 2, now this is the upper control limit, that is UCL is equal to D4 R bar, and again LCL is equal to D3 R bar. So these are the limits, upper control limits and lower control limits. These we can calculate, and these D3, D4 depends upon the sample size. So in this case 4 samples are there, so D3, D4 is different. We can take the values from table, statistical table is there. If sample size is 3, 5, so these values differs. उनकी वैल्यू अलग अलग होगी यदि सैम्पल साइज अलग अलग होगा. तो अपर कंट्रोल लिमिट हम निकाल लेंगे, लोअर कंट्रोल लिमिट निकाल लेंगे, फिर हम एक प्लॉट करेंगे. R1 पॉइंट सपोज यहाँ आता है, R2 यहाँ आता है, 1, 2, 3, 4, एंड सपोज थर्ड पॉइंट इज लाइज हियर, मीन्स थर्ड पॉइंट लाइज आउटसाइड द लिमिट. यदि आउटसाइड द लिमिट है, मीन्स जो हम मॉनिटर है, क्वालिटी करेक्टरिस्टिक्स है, वो हम जो वी आर यूजिंग मिनीटैब सॉफ्टवेयर, उस पर हम एनालिसिस करके देखते हैं कि ये पॉइंट बाहर है. देन वी हैव टू फाइंड व्हाट इज़ द रीज़न, उसका क्या कारण है कि ये वाला पॉइंट हमारा लिमिट से बाहर है. सो फॉर दैट देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन एरर, मीन्स ह्यूमन की एरर हो सकती है, उसकी जो ट्रेनिंग दी गई उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, या किसी मशीन में प्रॉब्लम हो सकती है, मशीन में वाइब्रेशन ज़्यादा हो सकते हैं, या हो सकता है कि जो हमारा रॉ मटेरियल है वही डिफेक्टिव हो. सो वी हैव टू कंसंट्रेट ओवर दिस सैंपल एंड मेक द नेसेसरी करेक्शंस. Similarly, we can draw the X bar chart also. For X bar chart, there is same procedure is there. We have to take the average of this, that is X bar 1, X bar 2, X bar 3. इनका एवरेज लेंगे, इनका एवरेज लेंगे, इनका फिर ओवरऑल एवरेज हम कैलकुलेट करेंगे, that is X double bar. So the again this is the X double bar, and this is the upper control limit, this is the lower control limit. So X double bar, so upper control limit and lower control limit. So upper control limit is, we can calculate using, that is X double bar plus A2 R bar, or lower control limit is, we can say that X bar minus A2 R bar. So अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं. फिर अगेन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बार, मतलब सैम्पल 1 की एवरेज वैल्यू क्या है, 2, 3, 4, एंड वी प्लॉट हेयर, हेयर एंड हेयर, 3 and 4, एंड सी इफ देयर इज
sample which is falling outside the limit, then we have to see what is the reason. So, this way these all analysis we can do in computer using Minitab, and we can monitor the process and adjust a process to give a desired output, and therefore, we can control the desired output. It is used in industry to maintain quality and improve performance. An example of a simple process that is controlled is keeping the temperature of a room at a certain temperature using a heater. So, in this what we are using basically the feedback control system. Feedback control system यूज़ करते हैं और उसके अलग अलग पैरामीटर होते हैं, अलग एलिमेंट कह सकते हैं. एक इनपुट पैरामीटर होगा जो कि टेम्परेचर हमें सेट करना है. सपोज वी हैव टू सेट द टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस ऑफ ए सर्टेन केबिन, और आउटपुट पैरामीटर है हमारा सपोज 30 डिग्री जो कि कम है, वो वेरी कर रहा है, 30 हो सकता है, 25 डिग्री हो सकता है, उसको हमें बढ़ाना है. और प्रोसेस हमारा हीटिंग होगा. वी आर यूजिंग फीडबैक सेंसर जो हमें फीडबैक देगा कंट्रोलर को. कंट्रोलर कंट्रोल करेगा, एक्चुएटर को सिग्नल देगा. मीन्स यदि टेम्परेचर हमारा 30 है उससे बढ़ेगा, 32 होगा, 35 होगा, जब वो 40 हो जाएगा कि इनिशियल पैरामीटर के इक्वल. आइडियली इट इज़ नॉट पॉसिबल बट क्लोज टू द zero, the difference between the input parameter and output variable is close to 0, then control feedback sensor sends a signal to the controller, and controller sends the signals to the motor or compressor which we are using, that is act as a actuator, और वो actuator या compressor वो अपना काम करना बंद कर देगा. तो इस तरह से हमारा टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा. और फिर से जब टेम्परेचर ड्रॉप करेगा अगेन फीडबैक सेंसर कंट्रोलर को सिग्नल देगा, और फिर से वो जो कंट्रोलर है एक्चुएटर को सिग्नल देगा और हमारा जो एक्चुएटर है वो वर्क करना शुरू कर देगा. तो दिस वे वी आर गोइंग टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द सिस्टम. नाउ देयर आर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ऑटोमेशन. ऑटोमेशन के डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं लाइक पावर, प्रोसेस, कंट्रोल सिस्टम एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस. पावर का मतलब है कि सपोज एक हम प्रोसेस मीन्स सपोज कास्टिंग इज ए प्रोसेस, सो वी नीड थर्मल एनर्जी. थर्मल एनर्जी यहाँ पावर है, प्रोसेस हमारा कास्टिंग. कास्टिंग का पर्पस होता है कि एक मोल्टेन मेटल को हम एक मोल्ड में पॉर करते हैं, कुछ गैसें उसमें से स्केप करती हैं और जो मोल्ड का साइज होता है वो हमें ऑब्टेन होता है. तो दैट इज ए बेसिकली द सॉलिडिफिकेशन ऑफ लिक्विड मेटल. सिमिलरली लाइक इन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग. सो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग में क्या होता है, व्हाट इज देयर, एक टूल है और ये जॉब है. सो टूल इज देयर and job is there. So we have to create a spark over this gap. एक स्पार्क क्रिएट करना होगा. ये स्पार्क उतना होगा कि जो गैप है, गैप यदि मेंटेन नहीं है, मीन्स यदि गैप जीरो है, मीन्स दिस टूल टचेस दिस जॉब, सो क्या होगा, देयर इज ए शॉर्ट सर्किटिंग, और या गैप ज़्यादा है तो स्पार्क नहीं होगा. सो वी नीड स्पार्क. सो देयरफॉर इफ स्पार्क इज देयर, this job is melted and vaporized. So melting and vaporization होगा. So in this case again what is there, process is electrical discharge machining, that is EDM. And electrical discharge machining, and energy is electrical energy required. So electrical energy is required. Similarly, like in case of machining, we are using, there is a chip formation is there. So machining is the process and mechanical energy is required. Similarly, in case of forging, mechanical energy is required and forging is the process to deform the shape of a certain object. So power is needed, process. Power is again needed for program of instructions. Program of instructions से मतलब है कि लोड करना, अनलोड करना, कुछ सिग्नल्स देना, स्टॉप करना, स्टार्ट करना. Similarly, power is again used for controlling the system, control system. So we are using open loop control system and
closed feedback control system, that is closed loop control system. So, these are the different elements of an automated system. Now, we can take an example of these system, feedback control system. In this, what is there? There are 6 elements, 6 parameters. One is input parameter, second is process, third variable, fourth sensor, fifth controller, then 6 actuator. So, input parameter, suppose we have to maintain the system or in a cabin, in a room, that we have to maintain 25 degrees Celsius. So, input parameter is 25 degrees Celsius. Now, process, now output variable means we have process is cooling. Output variable means temperature is more than this and it is varies. It may be 30 degrees Celsius, it may be 40 degrees Celsius, like that. So, we have to reduce this temperature. Now, feedback sensor, the role of this is to give the value of to the controller, means difference between 30 degree to 5 degree, 25 degree or 40 degrees to 25 degree. So, when the difference between this output variable and input parameter reaches to 0, then controller sends a signal to actuator. So, this is the compressor actuator and actuator अपना काम करना बंद कर देगा, स्टॉप हो जाएगा एक्चुएटर और हमारा प्रोसेस रुक जाएगा. मीन्स अगेन आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद फिर से टेम्परेचर रेज होता है. देन अगेन फीडबैक सेंसर सेंड्स द सिग्नल टू द कंट्रोलर कि अब टेम्परेचर राइज हो गया है. अगेन कंट्रोलर सेंड्स द सिग्नल टू द एक्चुएटर, कंप्रेसर को इंस्ट्रक्शंस देगा. नाउ कंप्रेसर अपना काम करना शुरू कर देगा और कूलिंग प्रोसेस फिर से शुरू हो जाएगी. दिस वे the feedback control system works. Similarly, we can take the different example of this feedback control system. This is another example of feedback control system. In this, what is there? This is basically used to monitor this is basically used to check the distance moved by the table, work table, which is going to move, and then we find the difference value of between the work table and controller, and we can take that if the difference is 0, then the system, this motor will stop. This example we will discuss in the detail in the next lecture. Then these are the different level of automation, like device level, at machine level, at system level, plant level and enterprise level. These are the different levels. So, at device level actuators we are using, at machine level different machines like CNC machines, cells. Also we will discuss these different levels of automation by taking a suitable example and see why these levels are, why we are using these levels, what is the necessity and what is the advantage and disadvantage of automation and what is the need of automation in the coming lectures. So, today I have discussed about the another component of computer integrated manufacturing, that is CIM. So, CIM, that is computer aided manufacturing की हमने चर्चा करी है आज, और उसमें हमने we have seen that how CIM we are using different codes, G codes, M codes, and we will discuss this by. Okay. So, thank you.